Welcome back students. In today's video we will be discussing about times table. आज हम रिवाइज करेंगे टेबल फ्रॉम 2 till 10. राइट और इसको रिवाइज करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन ग्रिड इन विच आप देख सकते हो कि एक रो में उन्होंने 0 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके कॉलम्स में भी 0 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। इसी तरह दे हैव मेड दिस multiplication grid by using the different number counting over here. Alright. पहली रो में जी आपको नज़र आएंगे ज़ीरोज़ हैं, दूसरी रो में फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 12 और इसी तरह आप नीचे को जाएंगे तो आपके पास 12 तक काउंटिंग आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर 2 का टेबल है, यहाँ पर 3 का टेबल है, यहाँ पर 4 का टेबल है, यहाँ पर 5 का। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इट्स अ ग्रिड। इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक ग्रिड है। We will be using this grid in the next coming chapter in which we have to find the multiplication of a lot of numbers. So ये grid जो है वो हमें help करेगी to do the multiplication more quickly. Alright, but besides this grid I want you guys to learn the tables from 2 to 10 as well, so that if you don't have the grid with you, you can do it mentally as well. So let's look over here. We can see कि if we have to find a number कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको देखेंगे कहाँ पर एंड अप होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 4। इसी तरह अगर मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आई विल मेक अ लाइन लाइक दिस, ये 5 यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है, and this is the answer for 5 multiplied by 3. इसी तरह if I have to find the other numbers, जैसे कि 8 multiplied by 6, right? 8 multiplied by 6 के लिए I have to move along the grid. Row के I have to move in the row wise and I have to move it in the column wise to find the answer. So 6 multiplied by 8 is 48. अगर मैं यहाँ पे कुछ questions लिखती हूँ, I want you guys to practice it with me ताकि हम लोगों को ये multiplication grid जो है use करना आ सके और we will be using it in the upcoming questions. But I would like you guys to revise the times table by yourself as well. Okay, so let's write some of the questions over here. If we want to multiply 2 by 3, so how do we do that? We're gonna circle 2 over here and we're gonna circle 3 over here. इसी तरह हम row wise इसको move करेंगे और यहाँ से column wise move करेंगे until we meet a intersection point, यानी यहाँ पे दोनों points मिलते हैं and we can find the answer that 2 multiplied by 3 is what? It's 6. इसी तरह अगर मैं मूव करती हूँ कि वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 को सर्कल करूँगी और मैं यहाँ पर इसको 6 को सर्कल करूँगी। वी विल मूव इन द रो एंड विल मूव इन द कॉलम टू फाइंड द कॉमन क्यूब, और वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24. We're gonna practice some more of the question ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। 9 को हम करते हैं multiply with 2. So we are gonna circle 9 over here and we're gonna circle 2 over here. Let's move and see where these two numbers meet, and you can see that it meets at this number, that is 18. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, this is 18. That 9 multiplied by 2 is 18. So basically what times table mean is कि आप एक नंबर को repeatedly उतने times add करते हो। For example, if I ask you कि 2 multiplied by 3 कितना होता है, तो it means कि 2 को कितने times add किया जा रहा है, 2 को 3 times add किया जा रहा है। 2 into 3 is what? 2 into 3 is 6. We have learned over here.
और अगर मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आंसर क्या आता है, 6 आता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट टाइम टेबल इज, और हम इसको अपकमिंग वीडियोस में यूज करेंगे और हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।